Welcome to PyMates. In this video, we'll be discussing some questions based on the general form that we have already introduced in lecture 1. So we'll be continuing the same and we'll be practicing some questions based on the general form of the arithmetic progression. So our first question is, which term of the AP 21, 18, 15 is minus 81? Also, is any term 0? Give reason for your answer. So what do we have to do in this question? हमें ये AP given है. अब इस AP से हम क्या क्या लिख सकते हैं? First we'll write all those things. First term हमको यहाँ पर दिख रही है. First term को हम A से denote करते हैं. So the first term A is equals to 21. Also we can find the common difference. Common difference को हम D से denote करते हैं. And common difference हम किसी भी दो टर्म्स को जो साथ साथ आ रही हैं सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं. द कंडीशन इज जो बाद वाली टर्म है उसमें से पहले वाली टर्म को माइनस करना है. सो वी आर सब्ट्रैक्टिंग a2 minus a1. द सेकंड टर्म इज 18 एंड द फर्स्ट टर्म इज 21. सो 18 minus 21 is -3. सो d is -3. ऑल्सो उन्होंने हमें क्या बोला है, which term of this AP is -81. सो दे हैव सेड कि -81 इसकी कोई टर्म है बट हमें ये नहीं पता कि कौन सी टर्म है, तो हमें वो नंबर निकालना पड़ेगा. द जनरल फॉर्म वाज an equals a plus n minus 1 into d. तो अब उन्होंने बोला है -81 इसकी एक टर्म है, तो हम लेट कर लेंगे an equals -81 एंड वी हैव टू फाइंड कि ये कौन से नंबर पर आ रही है. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. सो वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n. an is -81, a is 21 plus n minus 1 as it is, and d is -3. So 21 when will come on the left hand side will become -21. So this becomes -102 on the left hand side and n minus 1 into -3 on the right hand side. Now this -3 will come in the denominator on the other side. So the equation becomes, so n minus 1 equals -102 by -3. n-1 को हम राइट हैंड साइड पर लिखें या लेफ्ट हैंड साइड पर लिखें एक ही बात है, हम इक्वेशन को रिवर्स कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आ सकती है. नाउ दिस नेगेटिव एंड नेगेटिव विल गेट कैंसल्ड and 3 will cancel 102 by 34. So it becomes n-1 equals 34, which implies n equals 34 plus 1 and n equals 35. So this means -81 is the 35th term of the given AP. Further, they have asked us, is any term 0? So we have to check, is there any term 0 in this sequence, and if the term 0 occurs, we have to find that term. तो अब हम फिर से वही करेंगे, an को 0 ले लेंगे और हम n फाइंड आउट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 0 यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा. First let us solve, then I will explain. So a was 21, d was -3, and we'll suppose an as 0. And we have to find the value of n, then only we'll get to know whether 0 occurs in this AP or does not occur. So an equals a plus n minus 1 into d. an is 0, a is 21 plus n minus 1, d is -3. So -21 equals n minus 1 into -3. So when we calculate that, this n comes out to be 8. तो अब n की वैल्यू यहाँ पर होल नंबर आ रही है. अगर n की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में आती तो फ्रैक्शन में तो कोई टर्म का नंबर हो नहीं सकता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म होती है, हाफ टर्म तो नहीं होती, तो तब हम बोल देते 0 does not occur in this AP. अब यहाँ पर हमारी n की वैल्यू होल नंबर आ रही है, दैट मीन्स द 8th टर्म of this AP is 0. Let's proceed to the next question. Question number 2 says, determine the AP whose third term is 5 and the 7th term is 9. So we are given that A3, that is the third term, is 5 and A7, that is the 7th term, is 9. अब हमको पता है जनरल फॉर्म इज an equals a plus n minus 1 into d. अब हम यही फॉर्मूला यूज करके A3 और A7 में वैल्यूज पुट करेंगे. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला A3 विल बिकम, n की जगह पर हम 3 पुट करेंगे. So a plus n minus 1 is 3 minus 1 into d equals 5. Similarly for A7, a plus 7 minus 1 into d equals 9. तो बस अब हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, a plus 2d is 5 and a plus 6d is 9. अब हमने चैप्टर
3 में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस में. If you have not seen that video, you can watch that video first, elimination method in chapter 3. Now there are two variables a and d in both the equations, first and the second equation. So we'll solve these equations using the elimination method. So from here we'll get minus 4d equals minus 4. अब हमको d की वैल्यू 1 मिल गई है, तो we can substitute this d equals to 1 in any of the two equations, 1 और 2, किसी भी equation में put करके हम a की वैल्यू find out कर सकते हैं. So we'll substitute d equals 1 in equation 1. We'll get the equation 1 is a plus 2d equals 5. So a plus 2 into 1 equals 5. So when we solve this, we'll get a equals 3. Now d is 1 and a is 3. So the question was to find the AP. अब हमें AP find out करनी है. तो AP find out करने के लिए हमारे पास A है और D है. अब AP find out करने के लिए हमें first 3 terms at least लिखनी होती हैं. तो first term A1 will be A only, which is 3. Now here we'll be using the general formula. The general formula is an equals a plus n minus 1d. So substituting the values, we'll find out a2, a3. So a2 will be a plus 2 minus 1 into d. So 2 minus 1 is 1 only. So a plus d. So a2 is 4 and a3 will be a plus 3 minus 1 into d. That is a plus 2d. So the required AP is 3, 4, 5 and so on. Also you can notice one thing. जो भी हमें टर्म नंबर निकालना होता है, a2 फाइंड आउट करना है तो a प्लस डी करेंगे, a3 फाइंड आउट करना है तो हम a प्लस 2d करेंगे. बिकॉज इट्स n माइनस 1, तो उससे एक कम नंबर हम d से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो यू डोंट हैव टू अगेन एंड अगेन राइट द जनरल फॉर्म, यू कैन डायरेक्टली यूज इट. इफ इट कम्स a10, so you will write a10 equals a plus 9d. a20, it's a plus 19d. Let's proceed to the next question. Check whether 301 is a term of the list of the numbers these. Now this question is same as the question number 1, where we had to check whether 0 is the term of that AP or not. So here also we have to do the same thing. जैसे हमने 0 के लिए वहां पर किया था, an को 0 ले लिया था and then we solved and checked out the value of n. यहाँ पर भी हम same वैसे ही करेंगे. So we'll let an as 301. Here a is 5 and d is 6. So we'll directly use the formula. We have to calculate the value of n. So when we solve it, we'll get 296 equals, when 6 is multiplied, we'll get 6n minus 6. अब इसको हम further solve करेंगे, so we'll get, तो जब हम इसको पूरा solve करेंगे, we'll get n as 151 by 3. अब n की value fraction आ रही है. अब n is the number of the term, जो जिस place पर वो term आ रही है, उसका number है n. तो n cannot be fractional. वो एक नेचुरल नंबर ही हो सकता है कि जहां पर वो टर्म आ रही है फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे या फिफ्थ प्लेस पे. सो देयरफॉर 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस लिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी. अब हमें एपी गिवन है 10, 7, 4 एंड अप टू सो ऑन माइनस 62 एंड उन्होंने बोला है लास्ट वाली टर्म से, दैट मीन्स हमें पीछे से 11th टर्म फाइंड आउट करनी है कि अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें बैक साइड से तो 11th नंबर पे कौन सी टर्म आती है. आई विल बी यूजिंग 2 मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. विच एवर यू फाइंड इजी यू कैन यूज दैट मेथड. सबसे पहले हमको AP गिवन है, यहाँ से हम A की वैल्यू विच इज 10, D इज -3 एंड L आई हैव रिटन फॉर लास्ट टर्म. लास्ट टर्म मीन्स जो हमें लास्ट में गिवन है दैट इज -62. तो A, D और L की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ आफ्टर दिस वी विल बी यूजिंग 2 डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड द आंसर. फर्स्ट लेट अस लुक एट द फर्स्ट मेथड. अब हमको पीछे से फाइंड आउट करना है तो हम AP को उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो हमारी फर्स्ट टर्म -62 बन जाएगी एंड अप टू सो ऑन. जब हम उसको पूरा रिवर्स कर देंगे वील गेट 4, 7 एंड 10. जो हमारी 10 फर्स्ट टर्म थी अब वो लास्ट टर्म हो चुकी है. -62 इज आवर फर्स्ट टर्म. तो A, D और सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी. अब हमें जब पहले AP उल्टी थी तो हमें पीछे से 11th टर्म निकालनी थी, बट अब हमारी जो लास्ट वाली टर्म है वो फर्स्ट टर्म पे आ चुकी है, फर्स्ट प्लेस पर आ चुकी है. तो अब हमें यहाँ से 11th टर्म निकालनी है. तो सिंपली अब आगे से 11th टर्म निकालनी है तो वो A11 ही होगी. जब पीछे से निकालनी थी तो हमें नहीं पता फ्रंट से उसका क्या नंबर होगा. हो सकता है वो फ्रंट से 6th नंबर पे आ रही हो सकता है वो फ्रंट से 15th नंबर पे आ रही हो, वी डोंट नो. तो
यहाँ से डायरेक्टली A11 हम फाइंड आउट कर सकते हैं AP को रिवर्स करने के बाद. द फर्स्ट टर्म A विल बिकम -62, D विल ऑल्सो चेंज. अब 10 - 7 3 हो जाएगा. A11 वी हैव टू फाइंड आउट, N is 11 over here. So A11 is A plus 10D. So A is -62 plus 10 into D is 330. So we'll get A11 as -32. So this is our 11th term from the last term. Now the other method is कि हम जो लास्ट टर्म से 11th टर्म है उसका फ्रंट से नंबर फाइंड आउट कर ले कि वो फ्रंट से कौन सी प्लेस पर आ रही है, एंड देन हम फ्रंट वाला फॉर्मूला यूज करके वो वाली टर्म निकाल लें. सो टू फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. तो अब हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होंगी तो हम बता सकते हैं कि वो फ्रंट से, फॉर एग्जाम्पल टोटल टर्म्स 20 है, तो जो बैक साइड से 11 नंबर पर होगा वो फ्रंट से 10th नंबर पर होगा. सो लेट्स सी अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. सो द लास्ट टर्म L इक्वल्स A प्लस N माइनस 1 इंटू D. अब हम यहाँ पर AN यूज करते थे यूजुअली, तो अब हम L भी यूज कर सकते हैं. इट इज वन ऑफ द सेम थिंग क्योंकि AN हमारी लास्ट टर्म ही है. So -62 equals 10 plus n minus 1 into D is -3. So from here we'll get n as 25. So that means the number of terms are 25. तो जो लास्ट से 11th टर्म होगी हमारी वो फ्रंट से हमारी 15th टर्म होगी. तो फ्रंट से 15th टर्म will be A15. So you will find simply A15. It comes out to be -32. So whichever method you use, the 11th term from the last term comes out to be -32. Next question is, in the following AP, find the missing terms in the circles. We have to find the missing terms. Let us first number all the terms. This is our first term A1. This is our second term A2. The next one is A3. Similarly A4, A5 and A6. अब हमें दो terms given है question में, बाकी सारी are not given. So we have to find A1, A3, A4 and A5. A2 and A6 are given. Let us first write those two terms. A2 is 38. That means A plus D is 38. Similarly, A6 is -22. So that means A plus 5D is -22. अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन. इन दो इक्वेशंस को हम फिर से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं एज वी डिड अर्लियर, और फिर A और D की वैल्यूज मिल जाएंगी तो वी कैन फाइंड एनी टर्म. So solving these two equations, we get D comes out to be -15. So A is 53. So we have found both A and D. Now we can find all the terms. We had to find A1, A3, A4 and A5. A1 is the first term A only, which is 53. A plus 2D and we'll get 23. Similarly A4 and A5. So all the values can be calculated using the value of A and D. So I hope you have understood all the 5 questions. You can practice similar questions from the exercise 5.2 of your book and the exercise 5.1. We have covered some of the questions. We'll be doing some more questions in our next video. If you have any doubt from these 5 questions or from the NCERT, you can comment below in the comment section and I'll explain it to you. Or you can use the mail ID given in the description box to ask your queries or give your suggestions. Subscribe to the channel for more videos and more content to this chapter as well as other chapters.